everyone. Hi everyone, welcome back to my channel again. My name is Sonam Rajput and I make videos on makeup, travel, fashion, beauty, lifestyle, skincare and much more. Okay, so here in this video we are going to talk about concealer or you can say some hacks to make your concealer long lasting for the whole day, especially in the summer season, so that it won't get sweaty or creasy, क्योंकि हमारे अंडर आइज होते हैं, अंडर आइज में creases होते हैं, that is completely normal. So we want our makeup to look very flawless and also to intact for the whole day. And I will be shooting a new or other special dedicated video on my makeup look, on my birthday makeup look that I created on my birthday, of course. So yeah, उस टाइम पे मैंने जो हैक्स ट्राई किए थे, इट वॉज वेरी गुड बिकॉज हमने नॉन स्टॉप 3-4 घंटे नाचे हैं एंड मतलब इतना ज़्यादा गर्मी थी रात के टाइम पे भी, एंड इतने पसीने आने के बाद भी जब हम रात को घर आए वापस, सो स्टिल आवर मेकअप वॉज इंटैक्ट. इवन जो मैंने अपने हैक अपने पर ट्राई किया था वो मैंने अपनी फ्रेंड के भी ट्राई किया था, तो उसका भी कंसीलर वैसा का वैसा था, मेरा वाला भी वैसा था. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर दोज टिप्स एंड ट्रिक्स विद यू गाइज. सो या, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज हैक्स to make your concealer long lasting. So yeah, if you are interested to know how you can make your concealer look अरे कहना क्या चाहते हो? How you can make your concealer long lasting for the whole day, watch till the end. And yeah, without wasting any more time, let's get into the video. और वीडियो अच्छी लगे then do not forget to like, share and subscribe to my channel and hit that bell icon as well so that you won't miss any of the new video on YouTube, of course. And yeah, without wasting any more time, let's get into the video. So okay, so मेकअप बेस में तो मैंने सबको कितनी बार बताया है कि आपको ज़रूरी है दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक केयर ऑफ स्किन. अगर आपकी स्किन अच्छी होगी तो आपका मेकअप भी अच्छा होगा. कई लोग क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर और बाकी सारे प्रोडक्ट्स अपने फेस पे लगाते हैं, अपने अंडर आई पे नहीं लगाते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से अंडर आई पे भी हर एक प्रोडक्ट लगना ज़रूरी है, बिकॉज तभी वो डिस्कलरेशन आ जाती है आपके अंडर आइज में और आपकी बाकी की स्किन पे. सो मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑन योर अंडर आइज एज वेल. So the first and the most important step is to prep your under eyes as well. That means to hydrate them, to moisturize them well. You can use your moisturizer that you usually use for your face, or you can have your own under eye cream. वैसे मेरे पास है, but right now I don't know, इतने सारे products हो चुके हैं कि कहाँ रख दिए मैंने. So I'll just go ahead and try to moisturize my face along with my eyes, and that's it. Right now for the moisturizer I'm using this Mopsco Natural Whiter Rich Face Cream with Vitamin C, B3, B5, E and Hyaluronic Acid. काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है, स्पेशली फॉर दिस समर सीजन. सो मैं इसको अपने फेस पे तो लगाऊंगी, बट अंडर आइज पे भी अच्छे से मसाज करूँगी एंड ट्राई टू मसाज इट वेल. एंड इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगी ताकि आपकी जो पफिनेस है आपके अंडर आइज पे वो थोड़ी कम हो जाए. और ऑल्सो आपकी अगर कोई भी मतलब डार्क सर्कल है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐसे मसाज करेंगे ना, तो वो आपकी डार्कनेस और डार्क सर्कल्स भी कम हो जाएंगे. सो ट्राई टू अप्लाई एवरी प्रोडक्ट ऑन योर आई अंडर आइज एज वेल. कुछ नहीं बिगाड़ा उन्होंने भी. सो ट्राई टू मसाज इट and then you are good to go. Leave it for at least 30 to 40 seconds. First step is done. Now let's move on to the second step. Now the second step is also the most important step because क्योंकि हर एक के आजकल जो स्केड्यूल चल रहा है उस हिसाब से सबके थोड़े डार्क सर्कल्स होते हैं. एंड इफ इन केस यू आर नॉट हैविंग दैट, चाहे इतने से भी नहीं है, स्टिल आई वुड सजेस्ट यू टू डू इट, बिकॉज आपकी हमारी जो अंडर आइज होती हैं वो ब्लूइश और पर्पलिश टोन में होती हैं एंड वी वॉन्ट टू कैंसिल दैट आउट करते हैं. सो मेक श्योर अगर आपके बहुत लाइट पिगमेंटेशन है तो यू कैन यूज़ योर पीच कलर करेक्टर, योर येलो कलर करेक्टर. मैंने शायद इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी फॉर दिस होल कंसेप्ट ऑफ कलर करेक्टिंग. सो इफ इन केस यू हैवंट चेक दैट, यू कैन चेक दैट आउट. एंड राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस पीच कलर करेक्टर क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा नहीं हैं. आई एम यूजिंग दिस पैलेट फ्रॉम Forever 52 Camouflage palette. And if in case आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना, I'll mention the links in the description box so you can check them out. Okay, so I'll use this speech corrector क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा discoloration नहीं है. So try to use color correctors and
Yes, I'm using it. Or else you can use any dark shade as well. And now we are going to blend this out. I personally like to blend it with my fingers only क्योंकि फिंगर की warmth से बहुत अच्छे से blend हो जाता है. दूसरा कि हमारे fingers जो हैं वो ज़्यादा product absorb नहीं करती हैं. And trust me, ये वैसे palette बहुत versatile है. And yeah. ये शायद आपको मेरी स्क्रीन पे लाइट लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, शायद लाइटिंग की वजह से, बट दिस इज पीच इन कलर. अगर आपके बहुत ज़्यादा इंटेंस वाले डार्क सर्कल है, सो यू कैन गो अहेड एंड यूज any bright orange color if you have intense dark circles. But if you have light dark circle like me, so you can go ahead and use like a peach or yellow color corrector, maybe light orange color corrector. Now we are going to actually conceal our under eyes. So first of all, you can take any shade, you can take any of your concealer which is exact your skin tone, or maybe one shade lighter than your skin tone. Now take any of your blender and try to blend it with you will see after hydrating your eyes ना बहुत easily blend हो जाएगा. दूसरा, अगर आपके products अच्छे होंगे तो आपकी वैसे भी बहुत अच्छी blending होने वाली है, and it is looking very good right now. Our fourth step is set it up with the compact powder or with the loose powder. But first I'm going to lightly set it up with the compact powder. For the compact powder I'm using this My Glam Super Serum Compact. बहुत हल्के हाथ से I'll just try to set it up, क्योंकि इसके बाद हमने थोड़ा सा लूज पाउडर से भी सेट करेंगे. एंड या नाउ दैट इज इट. इसके बाद इसको सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आएगा इसके बाद, जो इसको बनाएगा बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, which is the makeup fixer. Yes, you can take any of your makeup fixer. I'm using right now, this is from Blue Heaven, long lasting makeup fixer, very good, very affordable as well. I'm just spraying it on my beauty blender a little bit. Now you just have to dab it on your under eyes. नाउ यू विल रियलाइज कि आपका बहुत ज़्यादा जो अंडर आइज है ना, वो बहुत ज़्यादा ड्यूई और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लगेगा, बहुत नेचुरल लगेगा. नाउ द लास्ट पार्ट इज टू सेट इट अप विद द लूज पाउडर और टू बेक योर अंडर आइज. ट्राई टू यूज़ अ लूज पाउडर विच इज़ वेरी फाइन. ये बहुत ज़्यादा फाइन है. सो आई एम यूजिंग दिस लूज पाउडर एंड मेक श्योर दैट आप ऊपर की तरफ देखें एंड उसके बाद अप्लाई करें बिल्कुल लाइटली. पहले इसको एक्सेस जो भी है वो अपने हाथ पे लगा लेना, and then set it up with the loose powder and try to let it set for at least 5 minutes. उसके बाद जो भी excess होगा वो fall off कर देना and you will see the results like in one go. And trust me, ये hack try करना, you will definitely going to love this. और पूरा दिन देख लेना, आपका crease नहीं करेगा और ना ही आपका मेकअप खराब होने वाला है फॉर द होल डे. दीज वर द 6 स्टेप दैट यू कैन यूज. एंड मिलते हैं लास्ट में. मैं अपना पूरा मेकअप कर लेती हूँ एंड आई विल शूट दी अदर वीडियो एज वेल. तो मिलते हैं लास्ट में. आई विल शो यू द फुल फेस ऑफ माई मेकअप. Okay, so this is the final look that I've created for my birthday, and this is how my under eyes looks like. And trust me, ये पूरा दिन नहीं हटेगा if in case you are going out in this summer season. Well, I was on my birthday eve और हमने काफ़ी डांस किया है 3-4 घंटे नॉन स्टॉप. एंड ट्रस्ट मी, कहीं से भी मेरा मेकअप ख़राब नहीं हुआ, नॉट इवन माई फ्रेंड्स. और या बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस सा अंडर आई मेरा रहा है. यू कैन सी बहुत ज़्यादा क्लीन सा मेकअप लुक लग रहा है. सो डू ट्राई दिस हैक्स एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस. एंड हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.